Good morning, everyone. In a previous class, that is yesterday, I had uploaded the video in which we have started lesson number 10, 18th century political formation. And the fifth lesson, we have already completed rulers and buildings, and question answers was also given in the PDF form in the student portal. Now today we are going, means yesterday only we have started, but today we are going to just make a recall of what we have understood in our previous video. Now this 18th century political formation, as the name indicates, we will see about the structure, about the areas, about the new territories formed during the 18th century in India. Clear? Now, previously we have seen that Mughal Empire was there and the rule of Mughals were there. In that, the territory, Mughal external boundary was whole of India here. You can see the dotted lines. You can now this whole of these territories all over India was the rule of Mughal Empire, Mughals. And then in 18th century, again it was reshaped when the coming of the Britishers were there. Then the new territories, means many territories were taken under the control of the Britishers, and thus the shape of this uh, means Mughal rule, the territories over which they were having the control previously, but now they were not having that much territories under their control. Then many, apart from this British control, in the mid 18th century, there were many other means territories also, in which we have seen that the nobles had control and they had made their own supremacy in that particular territory on which they had been given control over the provinces by the Mughal authority, Mughal rulers. मुगल रूलर्स के द्वारा जो उनको वो गवर्नरशिप वहां पर दी गई थी किसी प्रोविंसेस में, उन नोबल्स ने अपने आप को एक फर्म एडमिनिस्ट्रेशन, अपना कंट्रोल पूरा, अपनी सुप्रीमेसी उस प्रोविंस पे जमा करके, और वो मुगल कंट्रोल से, सुप्रीमेसी से अलग हट गए थे. Now in this we have seen that in this lesson we will see about the first half of the 18th century, that is 1707, when Aurangzeb died. Now when Aurangzeb died, the successors of Aurangzeb, now Aurangzeb was the Mughal ruler, the successors of Aurangzeb were very weak and they were not able to consolidate. They were not able to consolidate. Consolidate means they were not able to have the control. So much powerful, they were not so much powerful as till the Mughals were till Aurangzeb, and then they were not able to consolidate to make their empire means they to have a firm control over their empire. And first and foremost thing was that we have seen that Aurangzeb had depleted many military and financial resources in his empire. That means many financial and military resources. The wealth was emptied because of the expeditions of Aurangzeb. Aurangzeb continuation में फाइट्स, वॉर पे कंटिन्यू रहता था, एक एम्पायर को दूसरे एम्पायर से, मीन्स कंटिन्यू फाइटिंग विद, वॉर ऑफ डेक्कन भी था, डेक्कन में कंटिन्यूएशन में वो वॉर फाइट कर रहा था, और भी अपनी टेरिटरीज को एनलार्ज करने के लिए उसने काफ़ी अपनी मिलिट्री और फाइनेंशियल रिसोर्सेज खर्च कर दिए, एक्सपेंड कर दिए, और इसीलिए जो औरंगज़ेब के सक्सेसर्स आए उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ, ना तो मिलिट्री इतनी पावरफुल रही और ना ही उनके पास कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे इतने. दैट इज़ व्हाई द मुगल एम्पायर became means weak day by day, and under his successors the efficiency of imperial administration broke down. फिर इनके successors means इनके आने के बाद, इनकी डेथ के बाद जो रूलर्स आए वो इतने एफिशिएंट नहीं थे जैसे कि पहले मुगल रूलर्स थे.
Now it became increasingly difficult for the later Mughals to keep a check on powerful Mansabdars. अब जो powerful Mansabdars थे, as they were not having so much military power, the successors of Aurangzeb not having military powers and financial resources, they were becoming weak in front of the Mansabdars, and they were not able to have uh, so much control over the Mansabdars. Mansabdars means we have already understood this term in a previous lesson that they were the means uh, people who got the grants, who got the land, and who had the control over military and all. So they were assigned the uh, work by the ruler itself, and they were given the grants to take care to collect the revenue and all. Even they were responsible for maintaining the army of the nobles. So these were the work of Mansabdars, and they were becoming powerful after the death of Aurangzeb. Then further we have seen that not only due to the lack of financial and military resources, but after the death of Aurangzeb, peasants and zamindari rebellions in many part of the northern western India also added the problem. Means due they were also responsible for the downfall of Mughal Empire. That means many peasants means farmers और जमींदारी के rebellions अपोज खड़े हो गए ये किनके अपोज में खड़े हो गए मुगल रूलर्स के अपोज में जस्ट बिकॉज ऑफ माउंटिंग टैक्सेस मीन्स बहुत हाई टैक्सेस कलेक्ट करने लग गए थे ये नोबल्स वगैरह इसीलिए ये लोग रूलर्स के खिलाफ खड़े हो गए अपोज में रेबिलियन करने के लिए रिवोल्ट करने के लिए एक तरीके से तो पहले तो डिप्लेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड मिलिट्री रिसोर्सेज second peasants and jamindari rebellion also was responsible for the downfall then uh, again many powerful chieftain consolidate their own position वो जो powerful chieftain थे जो nobles थे वो अपनी position और powerful कर रहे थे मुगल्स के खिलाफ and they became a challenge to the Mughal authority. And then we further see that Aurangzeb was unable to arrest the gradual shifting of political economic authority into the hands of provincial governors, local chieftains and other groups. और धीरे धीरे हम देखते हैं कि औरंगजेब बिल्कुल ही वीक हो गए थे लास्ट डेज में वो बिल्कुल ही वीक हो गए थे और अब वो धीरे धीरे उनकी जो पावर थी ग्रेजुअली धीरे धीरे वो शिफ्ट उनकी पॉलिटिकल इकोनॉमिक अथॉरिटी जो थी उनके हाथ में पहले मुगल रूल की वो धीरे धीरे कहाँ शिफ्ट हो रही थी गवर्नर्स के पास नोबल्स के पास लोकल चेफ्शियंस जो लोकल चीफ बना दिए गए थे मुगल रूलर्स के द्वारा टू टेक केयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर प्रोविंस वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे so these are the main reasons. Then we have seen that rich harvest and empty coffers. Harvest rich हो रहा था, काफी अच्छा agricultural crop production हो रहा था, but then also empty coffers. Empty coffers means जो खजाना था वो फिर भी खाली था. खजाना क्यों खाली था? Because these people, peasants and zamindars were not paying the part to the state that is to the Mughal rulers, and that is why the empty coffers means खजाना धीरे धीरे खाली हो रहा था in the midst of the economic and political crisis the ruler of Iran अब ये next important point which was responsible for the downfall of Mughal empire was Nadir Shah the invasion of Nadir Shah ये जब इतना इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहा था सब लोग मुगल रूल्स के खिलाफ रूलर के खिलाफ खड़े हो रहे थे और फाइनेंशियल और इकोनॉमिकली इट वाज बिकमिंग वेरी वीक मिलिट्रीली आल्सो इट वाज बिकमिंग वेरी वीक इन दैट सच कंडीशन नादिर शाह सेक्ड एंड प्लंडर द सिटी ऑफ दिल्ली ऐसी कंडीशन में नादिर शाह जो ईरान का रूलर था उन्होंने दिल्ली पे कब्जा कर लिया प्लंडर लूटपाट शुरू कर दी प्लंडर मीन्स लूटपाट एंड टुक अवे इमेंस अमाउंट ऑफ वेल्थ और जो कुछ बचा था वो भी अपने साथ लूट करके ले गए This invasion was followed by series of plundering of raids Afghan rulers Ahmad Shah Abdali who invaded North India 5 times और इसके बाद फिर अफगान रूलर ने भी यहाँ पर
इन्वेजन किया, इंडिया में इन्वेजन किया, उन उस पे अटैक किया। और ये अटैक कितनी बार किया अफ़गान रूलर अहमद शाह अब्दाली ने? 5 टाइम्स। और ये करा 1748 से 1761 के बीच में। तो इस तरीके से इन्वेजन्स भी वो मोस्टली अफ़ेक्ट किए। दे वर आल्सो द रिस्पांसिबल फैक्टर फॉर द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर, और धीरे-धीरे मुगल एम्पायर वीक होता गया। Now, this we have already done. Nadir Shah attack on Delhi, how it made an attack and how he consolidated its position and took away all the wealth and possessions. So, then we also see that two Mughals, powerful groups among nobles also, nobles only divided among two powerful groups. Nobles खुद दो मेन ग्रुप्स में बट गए थे। उनका दो ग्रुप का नाम था ईरानीज और तुरानीज। अब ये दोनों ग्रुप अपना खुद का सुप्रीमेसी बना रहे थे मुगल एम्पायर में। एंड दे वर टू पावरफुल ग्रुप, ये दोनों बहुत ही पावरफुल ग्रुप थे। और ये लोग मुगल एम्परर्स को बहुत ह्यूमिलेट करते थे, डिसरिस्पेक्ट शो करते थे। नाउ फारूक शियार एंड आलमगीर सेकंड वर assassinated. Now Farooq Shiar, the successor of means in the Mughal rule, Farooq Shiar was the Mughal ruler, and Alamgir second was also the Mughal ruler. They were assassinated, and two other Ahmad Shah and Shah Alam second were blinded by their nobles. अब इन लोगों को ये जो मुगल रूलर्स थे, जो कि औरंगजेब के सक्सेसर थे, औरंगजेब के बाद जो राजा बैठे ये लोग, ये इतने वीक थे कि इनको नोबल्स इतने पावरफुल हो गए कि नोबल्स ने इनको किसी को तो असैसिनेट कर दिया, मार दिया, और किसी को दे वर ब्लाइंडेड बाय देयर नोबल्स, किसी किसी को तो अंधा कर दिया, ब्लाइंड कर दिया। Means such humiliation was given by the nobles. Now today we are going to start with emergence of new states. I hope now the first part of explanation is clear, everybody. Now second part will start today, emergence of new states. Now how the emergence of new states, how the in the political formation, how the new states came into being. With the decline of authority of Mughal emperors, the governor of large provinces, subedars, and great zamindars consolidated their authority in different parts of the subcontinent. Now, the governors and the subedars, they consolidated, they made their position firm in the Mughal authority. मुगल रूलर्स के अंडर में जैसे जैसे मुगल रूल डिक्लाइन हो रहा था, उससे पहले वो अपना कंसोलिडेट कर रहे थे, अपना पावर, अपनी सुप्रीमेसी फर्म कर रहे थे मुगल एम्पायर में। देन we see through the 18th century, the Mughal Empire gradually fragmented into number of independent regional states. Now, slowly, we have seen that through the 18th century में ही हम देखते हैं कि मुगल एम्पायर was gradually fragmented. Gradually fragmented means धीरे धीरे वो एक तरीके से ब्रेक होता जा रहा था, चूर चूर टुकड़े टुकड़े होता जा रहा था। इन द सेंस वी कैन से दैट जब जो इतना बड़ा फर्स्ट पेज पे हमने मैप देखा मुगल एम्पायर का, एवरीबडी वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल रूलर, वो एक तरीके से बिखर रहा था, टूट रहा था। फ्रेगमेंट मीन्स टूट रहा था। कहाँ कैसे टूट रहा था? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट्स, बहुत से स्वतंत्र अपने खुद के रीजनल स्टेट्स हो गए थे। नोबल्स ने अपने रीजनल स्टेट्स बना करके और मुगल एम्पायर से अपने आप को अलग कर दिया था। नाउ ब्रॉडली स्पीकिंग द states were divided into three overlapping groups. Now, three over these states, as they were fragmented, they were broken away from the Mughal empire. They were divided. These states were divided into three main groups. अब तीन ग्रुप्स में इन स्टेट्स को डिवाइड कर दिया गया। अब फर्स्ट ग्रुप क्या था? जो कि प्रोविंसेस लाइक अवध, बंगाल, Awadh, Bengal, and Hyderabad. Now, these were those provinces which were extremely powerful, but
and quite independent, but the rulers of these states did not break their formal ties with Mughal Empire. That means these states, Awadh, Bengal, and uh, Awadh, Bengal, and Hyderabad, they were very means powerful and independent. अपने आप को स्वतंत्र रखते थे, but then also they were still under control, under the foundation of Mughal emperor. So these were the first type of states in which Awadh, Bengal, and Hyderabad was included. Now next, we see, you can underline this first state. They were extremely powerful and quite independent, but these states do not break their formal ties. For means अपने आप को बिल्कुल ही मुगल एम्पायर से अलग नहीं कर दिया. Now second type of states, they were enjoying considerable independence under the Mughal as वतन जागीर. अब second type of states कैसे थे? वो एक तरीके से अपना मुगल के द्वारा ही वतन जागीर के रूप में अपना पावर एंजॉय कर रहे थे. Now what was Watan Jagirs? Watan Jagirs were the land given to the nobles, to the chieftains by the Mughal rulers to collect the taxes and all. वहाँ पर वो कुछ मुगल रूलर्स ने अपने नोबल्स वगैरह को ये प्रोविंसेस, ये जागीर दे दी थी, ये लैंड्स दे दी थी, जहाँ पर ये लोग अपना इंडिपेंडेंट रूल कर रहे थे, एंड दे वर रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट द टैक्सेस ऑफ दैट पर्टिकुलर जागीर. And these included several Rajput principalities. And this second type of states, in this they were included Rajput principalities. काफी राजपूत जो टेरिटरीज थी वो इसमें इंक्लूड करी थी वतन जागीर में. नाउ द लास्ट ग्रुप इंक्लूडेड स्टेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठा, सिख एंड अदर लाइक द जाट्स. नाउ द लास्ट ग्रुप ऑफ स्टेट्स इंक्लूडेड मराठा, सिख एंड जाट्स, एंड दे हैड मेड अ आर्म्ड स्ट्रगल अगेंस्ट मुगल्स. उन्होंने लड़ करके मुगल से अपना इंडिपेंडेंस, अपने आप को मीन्स अलग कर लिया और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया. मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर नो मोर अंडर द रूल ऑफ मुगल्स. सो दिस विल बी द थर्ड कैटेगरी, दैट इज मराठा, सिख एंड जाट्स. They had attacked, means they had fought the war, armed struggle with the Mughals to keep themselves free, और अपने आप को उन्होंने मुगल. So these were the three groups we have already started. First were the old provinces like Awadh, Bengal, and Hyderabad. They were powerful, but they were still with the ties of Mughal Empire emperor. Second were the those states of several Rajput principalities in which the Mughal had themselves given the Watan Jagirs to the particular Rajput principalities so that they can collect the tax and all. And the third category of the state was of those provinces, of those people who had made uh, uh, independence themselves, who had confirmed their independence by the long armed struggle against the um, Mughal Empire. So hope this three division of states is understood. Now the old Mughal provinces. Amongst the states, they were carved out of old Mughal provinces in the 18th century. Now 18th century Mughal provinces in the 18th century. Now we will read about one by one about Awadh, Bengal, and Hyderabad. How uh, they had made their independence from the Mughal Empire, and how the rulers of these Awadh, Bengal, and Hyderabad had attained supremacy in these provinces which were previously given by the Mughal governors. All these three states were founded by members of high Mughal nobility who had been governors of large provinces. Now, these three states, Awadh, Bengal, and Hyderabad, these states were given by whom? Mughal authority only, to whom? Mughal nobility. मुगल एम्पायर में जो नोबल्स थे वो हाई रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे थे. उन मेंबर्स को यहाँ की गवर्नरशिप दी थी मुगल एम्परर ने, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद की. All now in this, Shahadat Khan was in Awadh, the governor of Awadh province, Murshid Quli Khan of Bengal, and Asaf Jahan of Hyderabad. Now these three had occupied the higher mansabdari position and enjoyed the trust and confidence of emperors. Now these three of them
had occupied a very high position, means in the Mughal rule, and they had uh, gained the confidence and trust of the emperors, means उन्होंने मुगल emperors का, मुगल rulers का कॉन्फिडेंस और विश्वास जीत लिया था, और इसीलिए उनको बहुत हाई पोजीशन मनसबदारी की दी गई थी, उनके अंडर में ये प्रोविंसेस मुगल एम्परर के द्वारा दी गई थी। बोथ असफ जहां एंड मुर्शद कुली खां हैड अ जात रैंक ऑफ 7,000 each, while Shadat Khan Zat was 6,000. Now, what was Zat? Zat was the control over the military. How much military it was? We have already understood this term in the previous lessons. So Asaf Jah and Murshid Quli Khan had the Zat rank. Now, how much Zat rank was there? It was decided how high the position was of that particular noble or mansabdar. So Asaf Jah and Murshid Quli Khan had 7,000 each, and Shahadat Khan was having Zat of 6,000. Now coming to each province separately. Hyderabad, Nizam ul Mulk, Asaf Jah. Now, in Nizam ul Mulk Asaf Jah, who was the uh, founder of Hyderabad state. Nizam ul Mulk Asaf Jah was the founder of Hyderabad state, and his rule was from 1724 to 1748, was one of the most powerful members. एक तरीके से बहुत powerful member था इसका. And then पावरफुल मेंबर ऑफ द कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर फारूक शियार. फारूक शियार जब एम्परर था मुगल रूल में, तो वहाँ पर ये निज़ामुल मुल्क बहुत ही पावरफुल मेंबर था उनके कोर्ट में. ही वॉज एंट्रस्टेड फर्स्ट विद द गवर्नरशिप ऑफ अवध. सबसे पहले इनको गवर्नरशिप दी गई अवध की, निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ को. लेटर गिवन चार्ज ऑफ डेक्कन, एंड आफ्टरवर्ड्स ही वाज गिवन द चार्ज ऑफ डेक्कन. ही वाज मेड द governor of Deccan. As the Mughal governor of Deccan provinces during 1722, Asaf Jah had already gained control over uh, its political and financial administration. Now, when Asaf Jah, Nizamul Mulk Asaf Jah had already gained control over political and financial administration पे अपना control जमा लिया था, when he was given the governorship of डेक्कन प्रोविंसेस. डेक्कन प्रोविंसेस की देखभाल के लिए जब उनको रखा गया था एम्परर के द्वारा, तभी उन्होंने अपनी कंट्रोल फर्म कर लिया था पॉलिटिकली एंड फाइनेंशियली इस प्रोविंस में. टेकिंग सब्सिक्वेंट एडवांटेज ऑफ टर्मोइल ऑफ डेक्कन एंड कंपटीशन अमंग्स द कोर्ट नोबिलिटी, he gathered power in his hands and became the actual ruler of that region. Now, uh, taking the advantage, he took the advantages of whatever disturbances were going on. Turmoil means disturbances were going on in the Mughal rule by the nobles at that time. It's due to the competition also was there, very tough competition was there amongst the noble, also in the court of rulers. So he, Asaf Jahan, took an advantage of that, and he gathered power in his hands, और अपना power अपने हाथ में ले लिया सब कुछ इस डेक्कन रीजन का, and became the actual ruler of this region. And पहले तो उनको गवर्नर बनाया गया था मुगल गवर्नर, मुगल रूलर के द्वारा, बट नाउ एक्चुअली ही हैड बिकम द रूलर बाय गैदरिंग पावर इन हिज हैंड्स. अपने हाथ में पूरा पावर लेने के बाद, फाइनेंशियली एंड पॉलिटिकली बिकमिंग सो पावरफुल, it has becoming means actual ruler of the region. Asaf Jah brought skilled soldiers, administrators from northern India who welcomed the new opportunities in the south. Now, Asaf Jah brought skilled soldiers. अब अपनी पोजीशन और पावरफुल बनाने के लिए उन्होंने स्किल्ड सोल्जर, बहुत एफिशिएंट सोल्जर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स लाए. कहाँ से? नॉर्थ इंडिया से. और ये रूल कहाँ कर रहे थे? डेक्कन, सदर्न में. और अपना पोजीशन पावरफुल बनाने के लिए स्किल्ड सोल्जर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स नॉर्दर्न इंडिया से लाए. एंड वो भी नॉर्दर्न इंडिया से सोल्जर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स बहुत ही अच्छे तरीके से हैप्पीली दे केम टू द साउथ बिकॉज दे फाउंड न्यू अपॉर्चुनिटीज. एक तरीके से उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी साउथ में आने की. एंड ही अपॉइंटेड मनसबदार्स एंड ग्रांटेड जागीर्स, और इन्होंने मनसबदार्स और जागीर को अपॉइंट किया
अपनी पोजीशन जब उनको एज अ रूलर मिल गया तो एंड उनको जागीर्स भी दी गई. जागीर्स मीन्स लैंड दिया गया. Although he was still a servant of Mughal emperor, he ruled quite independently without seeking any direction from Delhi or facing interference. Till now still he was the servant of Mughal emperor. अभी भी वो मुगल एम्परर का सर्वेंट के रूप में ही था, बट फिर भी वो अपना रूल इंडिपेंडेंटली रूल कर रहा था, अपना एडमिनिस्ट्रेशन अपना खुद का देख रहा था, विदाउट एनी इंटरफेरेंस. किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं था मुगल एम्पायर में. वो सर्वेंट नाम के थे, बट दे ही वाज हैविंग इट्स ओन एडमिनिस्ट्रेशन इन दिस डेक्कन रीजन. The Mughal emperor merely confirmed the decision already taken by Nizam ul Mulk Asaf Jahan. और जो मुगल एम्परर थे वो सिर्फ अपना यस बोलते थे, जो भी ये असफ जहां डिसीजन लेते थे मुगल एम्परर का यस ही में रहता था. Now, the state of Hyderabad was constantly engaged in struggle against Marathas to the west with the independent Telugu warriors chief Nayaks of the plateau. Now, continuously, this Hyderabad state was in the war with Marathas in the west and Telugu chiefs को क्या बोलते थे? Nayaks of the plateau and the ambitious Nizamul Mulk Asaf Jahan to control rich textile production areas of Coromandel coast. और ये जो निज़ाम उल मुल्क ये अपनी टेरिटरीज बढ़ाना चाहते थे और ये कहाँ पर कंट्रोल करना चाहते थे? रिच टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरिया. वहाँ पर कोरोमंडल कोस्ट के तरफ बहुत अच्छा रिच टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरिया था, वहाँ पर अपना कंट्रोल करना चाहते थे, बट ही वाज फेल्ड बिकॉज ब्रिटिशर्स हु वर बिकमिंग इंक्रीजिंगली पावरफुल इन दैट स्टेट. ब्रिटिशर्स थे वो वहाँ पर पावर गेन कर रहे थे, इसलिए ब्रिटिशर्स ने उनको वहां पर कंट्रोल करने का अधिकार नहीं दिया. आई होप दिस मच इज क्लियर. So that's all for today. In our next video, I will continue from page number 43. We can say 43. ये वापस से एक बार recall कर दूंगी and we will start with Awadh. And the next video will be on Monday. Monday, though there is no class, but then also I will upload the second part of, it means the third explanation will be there. First explanation yesterday I have done, second explanation today, the third explanation will be on Monday. Video uploading will be there. You and on the student portal, I will give the means link. You can go through that link if you want to understand the third part of this lesson. And whenever we'll meet next in the live class, we will recall once again the whatever part we have uploaded in the video uploading clear session. Till then, go through this and whatever doubt and all you can clarify in the next class. That's all for today. Thank you.